Rajasthan, one of the largest states of India, is incidentally also one of the driest. The total surface water resources in the state are only about 1% of the total water resources of the entire country. पहले आज से 30 साल पहले हमारे यहाँ 70 फुट नीचे पानी जल स्तर था। जैसे इंजन लगाते ट्यूबवेल चलाते 70 फुट नीचे 100 फुट नीचे पानी आता और आजकल लगभग 300 फुट तक जल स्तर नीचे गया। कुछ तो जैसे हम एक्स्ट्रा बिजली चलाते हैं ना, जैसे पहले तो जनरेटर वगैरह ये चलाते थे, उससे भी डाउन हो गया। काफ़ी टाइम टू टाइम बरसात भी नहीं आ रही है और काफ़ी ट्यूबवेल भी हो गए पहले से, इसीलिए स्तर डाउन हो गया, पानी बढ़ता है। पहले ये परेशानियाँ थी कि लाइटिंगों के भरोसे रहते थे हम। 6 घंटे रात में आती थी और 6 घंटे दिन में आती थी। तो कभी कभार वो ये ज़रूरी नहीं है दिन में ही आती थी, रात में भी है, कई बार कट जाती थी। पूरी बराबर सप्लाई वो 6 घंटे थी, वो भी नहीं मिलती थी। उसमें हम 2 ही फसल कर पाते थे। दूसरी बात, सोलर लगाने के बाद में अभी मेरे को साल भर हो गई, मैं कभी 3 भी फसल लगा लेता हूँ, कभी 4 भी फसल लगा लेता हूँ। The widespread usage of solar pumps, in the absence of an organized plan towards groundwater extraction, has led to some key concerns over its unbridled usage. Rajasthan already has many blocks that are experiencing groundwater depletion. In business as usual scenario, rising number of solar pumps will worsen the groundwater situation in the state. The use of solar pumps is the way of the future, but they need to be promoted in a way that the externalities associated with solar pumps can be avoided, especially that of groundwater overusage. Connecting the off-grid solar pumps to the grid can be one way of doing this. However, at an additional cost of grid improvement. अगर ये ग्रिड से कनेक्ट हो जाए तो ग्रिड से कनेक्ट होने के बाद में क्या है कि जैसे मान लो कि ये हमारा सोलर कभी कभी पड़ा रहता है, तो उसमें जैसे जो हमारे जो यूनिट वहाँ पर ग्रिड में जाएंगे तो उसके पैसे मिलेंगे। अभी तो ज़्यादा वेस्टेज आएगा इस सोलर से। जैसे अभी सोलर से कम 12 घंटे चलता है और पहले 6 घंटे बिजली आती थी। हाँ, काफ़ी लोग चलाते रहते हैं। सोलर है उसको कम यूज में लेना चाहिए वैसे, और बाकी सोलर की जो बिजली है वो बेचनी भी चाहिए अगर कोई ग्रेड वाला लेता है। ऐसी स्कीमें तो हमारे को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जैसे हम 2 फसल लेते हैं रबी कभी, तो ये तीसरी फसल और मिल जाएगी। जो ग्रेड वाले जो बिजली बचेगी फिर हमारे को बेच देंगे। उस हिसाब से पानी का कम होगा, पानी भी सही सीधे काम आएगा और हमारे पास आमदनी भी बढ़ जाएगी। इसमें करीबन दिन में 60 यूनिट ये बनाती है मशीन सोलर प्लांट से, तो इसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 यूनिट खत्म होते हैं, बाकी का ये पावर हाउस में वापस जाती है लाइट। अगर हम बिजली काम में नहीं लेंगे तो हमारी जो बिजली बचत हो रही है वो वापस जाके हमारे कुछ जाएगी और हमें कुछ इनकम का सोर्स भी मिलेगा इससे। तो ये हमारी एक इकोनॉमिकल रूप से हमें अच्छा मजबूत भी कुछ सहारा देगा हमें। पानी खूब बचेगा इससे। भाई बिजली बेकार पानी जाता है वो नहीं बचेगा, तो जिस तरह ऊँचा नहीं आएगा तो इस तरह आएगा बिल्कुल। जितनी आप काम में ले वो लेते रहो, बाकी पावर हाउस में वापस लाइट जाएगी, उन यूनिटों के पैसे तुम्हारे को वापस मिल जाएंगे। There's already some evidence now that solar irrigation pumps lead to increased water use in irrigation, either by increasing water use intensity or expansion in irrigated area, so which is a very desirable outcome in regions where irrigation expansion and groundwater development is a priority. For instance, in regions like Eastern India or tribal regions which forms the central India. But for regions like Rajasthan, where groundwater is already stressed, promotion of off-grid pumps without any design feature to incentivize economic water use might not be a good idea. So one way which we think is worth exploring is connecting these off-grid pumps to grid and offering a remunerative feed-in tariff, like PM Kusum Component C scheme. Some experience in Gujarat shows that if these solar pumps, off-grid solar pumps are connected to grid and a remunerative tariff is paid, then there is potential to incentivize economic water use behavior. Also, there is scope of convergence of PM Kusum scheme with other schemes. For instance, Atal Bhujal Yojana. So, Atal Bhujal Yojana is a flagship program of the Government of India which plans to promote sustainable groundwater management through demand-side interventions as well as supply-side interventions. Now, in demand-side interventions, the main idea is to reduce groundwater demand
and that is why it is targeted in areas or blocks which are already groundwater overexploited. Now, in the business as usual scenario, Atal Bhujal and Kusum can work against each other. If Kusum is only going to promote off-grid pumps, which will lead to more groundwater pumping, then Atal Bhujal Yojana's objectives will run conflicting with Kusum's objectives. Now, if these two schemes can converge, then Atal Bhujal Yojana can basically provide the additional incentive needed for farmers through grid-connected solar pumps distributed under Kusum. If the pumps can be given under Kusum, and then Atal Bhujal Yojana can offer additional groundwater conservation bonus to farmers, then this is something that is likely to encourage even more sustainable groundwater use. It will incentivize some of the things that Atal Bhujal Yojana is trying to do, like shift farmers to less water intensive crops, have farmers use water and energy more effectively. So this is where we feel that in the overexploited parts of the country, where both these schemes are going to be implemented together, these schemes need to work together and hopefully build a strong convergence which can help both the schemes. This will improve agriculture, reduce pressure on groundwater, and solidify farmers' climate resilience. Widespread usage of solar irrigation will inevitably be a part of India's green energy model in the future. Smart co-implementation of Kusum and Atal Bhujal Yojana objectives can make it an all-inclusive, energy-conserving one.